Good evening, everyone. Welcome to Unacademy. So today I'm going to discuss about the examination SNAP. Okay, we'll be discussing that how this examination is different from other examinations. What is the structure of the examination? Uh, what is the thing that you need to uh, prepare for it, right? What extra is needed for its preparation, etc. We will discuss it today's class. Okay. So this is one of the examinations. SNAP is used by Symbiosis University and its affiliated colleges. If we talk about Symbiosis Pune, that's a decent institute. Okay, and that is something that uh, we will discuss that when to start preparing, what was the structure last year, what are the topics that are asked. ठीक है so कई लोग होंगे जो snap देंगे so कैसे preparation करनी है and all we will discuss in today's video. So you can follow me on my Telegram channel, which goes by the name MBA Karo, and you can connect with me personally over there, asking any doubts, academic or non-academic doubts over there. We are starting this emerge batch for CAT tomorrow, and I'll be taking strategy and orientation session to guiding that how to prepare for CAT and other MBA entrance examinations. So if you are a plus or iconic subscriber, you can uh, attend this batch. And for an Academy Plus and Iconic subscriptions, you can use my referral code Pant10. So I'll be starting teaching in the upcoming batches, plus batches, in which I'll be teaching DILR in some of the batches and in quantitative aptitude in some other batches. So you can use my referral code for an Academy subscription and get discount on the subscription plan. I'm sure you are aware of this mega combat, which is going to be live on 17th of July at 12 p.m. It's a 1 hour test which has 30 questions, 10 questions from each of these sections. And like if you do well in this, it will help you get scholarships for an academy subscriptions. So this was my last year's scorecard. So just to tell that you can write snap 2 times. So since 2020 they have changed the format. Earlier it was 1 day examination. Now it is held on 3 days. So you can write it on two of the three occasions, right? So appeared 2 times. So what they do is they consider the better score, right? So they considered my this score as the final score for calculating the percentile. Okay, so like it is 15 marks general English, 25 marks reasoning, and 20 marks quantitative aptitude, right? So bad at English, but it scored less in both the two occasions, and but did decent in reasoning and quant section. Okay, so that is the structure of SNAP. Okay, 15, 25, and 20. So you can see that if you are good with quant and DI, this reasoning, okay, quant DI reasoning अच्छी है, so you can generally score good. Right? See how bad my English is, scoring just 5, but still managing to get an overall good score. Okay, so English is just 15 marks. So one big advantage to the people who are not so great at English, but in other two sections is that you can do well in this examination. Okay, now, if we talk about Snap, it is taken by about 50, 60,000 people. Like it is not as big as CAT, so obviously it is less number of test takers, and Symbiosis University conducts the examination. It has several colleges under its umbrella, like some 15, 20 colleges, but the best preferred ones are SIBM Pune. Okay, that is you can call it among top 20 colleges in India. Similarly, STMHRD is also among top 2025. Like it is for like if you want to go for human resources, this is one of the top 5 colleges for human resources. ठीक है, HR में जिसको MBA करना है उसके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है. So STMHRD Pune, then SIIB Pune, SIBM Bangalore, these are some of the top colleges through SNAP. There are many more colleges, but like अगर अच्छे colleges की बात करनी है, so these are the
ones that one must target, right? So जो most लोग prefer करते हैं SIBM and SCMHRD, इनकी कट ऑफ हाई जाती है, राइट? सो द कट ऑफ फॉर अराउंड SIBM वुड बी 98 पॉइंट, लाइक 97 से 98 परसेंटाइल के आसपास जाती है, एंड दिस ऑल्सो 96 97 परसेंटाइल के अराउंड कट ऑफ जाती है, ठीक है? एंड देन SIB पुणे अराउंड 95, SIBM भी अराउंड 93 94 ऐसे इसकी कट ऑफ जाती है दिन कॉलेजेस की, राइट? सो जिसकी कट ऑफ बेटर जाएगी ऑब्वियसली दैट्स अ that's a preferred college. Okay, last year papers can help you reach. Last year paper will give you some idea ki what type of questions are asked. Okay, so I'll talk about what kind of questions are asked in this examination. But yes, you that will definitely help you क्योंकि उससे आइडिया आ जाएगा कि किस किस तरह के स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल, ठीक है, और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. The criteria is like 50% in graduation, minimum 50%, 45% for SC/ST candidates. Okay, no bar on number of attempts. Notification अभी नहीं आएगा. Notification will come much later in November. But I'm talking about this examination now itself because you should know. ठीक है, आप लोग preparation कर रहे हो. So CAT is not the only examination that you must be targeting. There are many other examinations, right? And you should know कि कौन से question exams, like let's say if you are preparing for CAT, you take mock test, you realize कि CAT में अच्छा score नहीं बन पा रहा है, right? You are preparing, you are working hard, but despite that you are seeing that you are unable to match up that level. Okay, maybe it's the performance thing or some other thing, right? So that is something a matter of concern, but like targeting other exams, right? So you know that okay, ठीक है, snap एक exam होता है, nmat एक exam होता है, so you have alternate channels, ठीक है? So not everyone will be able to crack CAT, so you should look for other alternative also, right? कि हो सकता है कि snap might be easy for you. As I said कि English बहुत कम आती है, ठीक है? It is a speed based test. क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, इफ यू नो, इफ यू सी दैट यू कैन मास्टर दिस, ठीक है, सो यू कैन डू बेटर इन दैट. आरसीज नहीं आते, बिगेस्ट एडवांटेज इज आरसीज, नो आरसीज, ठीक है? सो इफ यू फियर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इफ यू फियर लेंथी सेट्स ऑफ DILR, दिस इज द एग्जामिनेशन दैट इज मेंट फॉर यू, ठीक है? सो एप्लीकेशन अभी नहीं आएगी, नवंबर में आती है, नवंबर दिसंबर अराउंड एप्लीकेशन होती है. फीस ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स की अबाउट अराउंड अबाउट 2000 के आसपास होती है, सो इट इज 1950, ठीक है? एंड यू कैन राइट इट 2 times. So there are 3 slots. You can appear 2 out of 3 times. तो जनरली एक दिसंबर में होता है, लास्ट ईयर एक 23rd December, 8 जनवरी, 16 जनवरी के, तो सो यू कैन पिक एनी 2 slots मैक्सिमम, एंड देन like December January में एग्जाम होता है. So much after CAT you can decide after CAT also, right? It is not necessary कि अभी से करना है. So Sharad, I'll be talking about IIFT also someday. ठीक है, what is in IIFT that you need to prepare, how important is GK, ठीक है, what are important other sections, right? How to clear cutoff, how to manage cutoffs and all. So I'll talk about that as well. Okay, so today let us discuss about SNAP. So SNAP pattern, if we talk about, it is like 60 questions. Okay, 60 questions and to be done in 1 hour. Okay, and if we talk about this, the distribution, it is 15 questions in VARC. Then there are like 25 questions in analytical and logical reasoning, and 20 questions in quantitative aptitude. Okay, so तो उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं. हार्डली DI का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तीनों स्लॉट में एक 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 क्वेश्चन ही आता, एंड एवरी आंसर इज -0.25, राइट? सो नेगेटिव मार्किंग भी है, सो यू नीड टू कीप इन माइंड की like it is 60 questions, 60 minutes with negative marking also. Okay, now let us see what is asked in the examination. ठीक है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, लास्ट ईयर क्या आया था. सो इफ यू टॉक अबाउट द BARC, देयर आर 15 questions.
So, 3 to 4 questions are on fill in the blanks, and these are like I'll talk about the time also. Okay, data is not available. Snap previous year questions अभी नहीं मिलेंगे. Maybe till 2015 or 16 these are available. क्योंकि उस समय they used to release the papers. Now they don't release it. Right, so you can like maybe in some videos you might find those questions, right? But I'll tell you the structure, what kind of questions they ask. And in books and all, you will find past papers till 2015-16. Like 5-6 years के papers मिलेंगे. तब जीके भी आती थी. Now GK is not present. Okay. Fill in the blanks, vocab based, preposition based. ठीक है, so कुछ vocab 3-4 questions आते हैं fill in the blanks के. vocabulary या preposition based. ठीक है, so grammar, vocab दोनों चीज cover हो जाती है. vocabulary के around 2 questions आते हैं synonym antonyms के. ठीक है, मतलब सिनोनिम्स पूछ एक वर्ड दिया रहेगा, डायरेक्ट दे विल आस्क सिनोनिम और एंटोनिम ऑफ दैट वर्ड. राइट, सो ग्रामर 4 to 5 क्वेश्चंस अराउंड टेंसेस. ठीक है, कन्वर्ट इनटू दिस टेंस. ठीक है, सो एक्टिव पैसिव. ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, कन्वर्ट दिस टू पॉजिटिव वॉइस, कन्वर्ट इट टू एक्टिव वॉइस, ऐसे करके आते हैं. एरर स्पॉटिंग, करेक्ट सेंटेंस. ओके, सो एरर स्पॉटिंग, like there will be 4 sentences divided into 4 parts. Which part has the error? Here sentence correction, that which is the correct sentence out of the given sentences, etc., are asked in the grammar part. Okay, then you have like idioms and phrases. ठीक है, so one thing that you need to remember is ये चीज करके जाना. It is not asked in all examinations, but in snap they ask, and that make a difference. ठीक है, so कैट में नहीं पूछते, बट स्नैप में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं idioms and phrases से. ओके, सो मेक श्योर दैट यू रीड अबाउट दोस. ठीक है, उसकी लिस्ट मिल जाती है टॉप 100 ईडीएम फ्रेजेस या टॉप 200. सो डू रीड अबाउट ईडीएम फ्रेजेस. सो स्नैप बेसिकली इज अ नॉन रीडिंग एग्जामिनेशन, रीडिंग इंटेंसिव नहीं है. लाइक कैट और स्नैप में बहुत डिफरेंस है कि कैट इज बेस्ड ऑन रीडिंग. यू सी दैट देर इज नो आरसी. ठीक है, इतनी बड़ी चीज. और कैट में क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेजरली आता है. ठीक है, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं आता. सो जिनको पैसेजेस पढ़ने से डर लगता है, ठीक है, फॉर देम इट इज अ गुड एग्जामिनेशन. और ये 15 क्वेश्चन जो है ना, दैट हार्डली टेक 7 to 8 मिनट्स. 7 से 8 मिनट में आप वर्बल का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि पैसेजेस पढ़ने नहीं है. राइट, यू डू नॉट हैव टू रीड एनी पैसेज, you just have to answer these short questions. So what you need to build for this is you need to have a strong grammar. Okay, and you need a good vocabulary to crack this examination, right? Because idioms and phrases, that is a sort of vocabulary, right? You know the language well. Okay, and vocab based questions are also asked. And then parajumbles, there is just one question, like 4 5 sentences to be arranged in order. Figures of speech, again grammar based question, right? Last year there was one question on poem in each of the 3 slots, right? So they had asked a poem, and that was grammar based, not like comprehension based. Grammar based in the sense ki they might ask you what is the figure of speech used there. ठीक है, तो like that could be figure of speech or some preposition based, right, or conjunction. I remember one of the questions was in one of the slots was based on uh, conjunction, right? So, like it is a grammar based question, you can say. So, again, basically, you need good grammar to excel in this. So, grammar is very important, plus vocab, mein idiom phrases, plus some vocabulary. So, that's a advantage to those students who have good grammar skills. ठीक है, so अगर जिसकी इंग्लिश में ग्रामर अच्छी है, vocabulary सही है, they can excel in the VARC part. ठीक है, because you do not have to read. So RC literally नहीं आता है, because 60 minutes में क्या RC करेंगे. Okay. Now talking about the analytical and logical reasoning. So it has 25 questions. Out of this 25 questions, around 7 to 8 questions are from verbal reasoning, right? Verbal reasoning, or you can, some people call it critical reasoning, that is one and the same thing. So that includes assumption, conclusion, inference, argument, strong weak argument, course of action, cause effect, etc.
So all these kind of questions are asked in this examination, right, which are not asked in CAT. Okay, so this is one thing that you need to prepare, because you cannot just rely on these questions, right? So you have to prepare for critical reasoning also. So as I said, in verbal you have to prepare for grammar. In reasoning you have to prepare for other parts, वो तो normal सब में चलते हैं, puzzles, direction sense, blood relations, etc., which you prepare for all examinations. Plus you need to prepare for critical reasoning also. Which exam is easy for a working professional? Now, the definition of easy might be different. Technically, SNAP is not a difficult examination, difficulty level wise. Okay, but the thing is, you have to prepare some extra stuff. Like as I said, you have to work on grammar, you have to work on critical reasoning, which is not asked in CAT. Okay, definitely CAT is a difficult one. Okay, SNAP is comparatively easy, and MAT is comparatively easy as compared to CAT. So, like, then there is on the flip side, the type of colleges you get is also different, right? So, of course, through CAD you get the IIMs, through Excel, this ZAD you get XLRI, which is one of the top institutes. Now, ZAD is most difficult exam. Then IIFT is also a difficult exam. You get IIFT, which is among the top 10 colleges. Now, SNAP and NMAT, moderate examinations, the type of colleges that you get are average, like except one or two colleges in each of these examinations, others are average, right? So if we are talking about top tier examination, top tier colleges, you have Symbiosis, SIBM Pune in this category. Okay, so that is the balance, right? Exam difficult है तो college भी अच्छे होते हैं, but yes, and not everyone cracks these, and even these institutes are really good ones, right? So like instead of just focusing on one examination, you should have other backup also. Okay, now clocks and calendars was asked heavily last year, 4 to 5 questions. Okay, CMAT is easy, yes, but CMAT you do not get very good colleges except Jamnalal Bajaj, which is like next to impossible for non-Maharashtra candidates. Okay, so that is about this section, right? Puzzles, 4 to 5 questions, two question के 2 से 3 question का set आता है. You do not get very lengthy puzzles. These are moderate level puzzles, which can be easy to moderate, which can be done fast. ये बहुत लंबी नहीं होगी. Maybe they will have 6 people in a circle without any extra element and all. Okay, direction sense, 1 or 2 questions, blood relations, clocks and calendars. And so clocks and calendars, these are standard things, right? Very standard questions of clocks and calendars. So if you know all the varieties, you can do them in the examination, right? It is not that like if a question comes, you won't be able to do. So if you have learned what are the different types of questions in clocks, right? Finding the angle between the hands, finding the time. Okay, so that is समथिंग दैट इज नोन. अच्छा, सीरीज बहुत आता है, ठीक है, नंबर, इसमें नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इवन इन योर क्वांट क्वेश्चन यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस, राइट? सो 5-6 क्वेश्चंस सीरीज के आते हैं. नाउ सीरीज, आई विल टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग, लाइक देयर विल बी 1 or 2 स्पीड ब्रेकर्स. What I mean by speed breakers is, ठीक है, स्पीड ब्रेकर क्या होता है? दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन इज, लेट अस से 4 क्वेश्चंस ऑन सीरीज, 3 आर वेरी इजी. आपने 3 कर लिए, चौथा आप करने लगोगे, फोर्थ विल हैव वेरी वेरी वियर्ड लॉजिक, ठीक है, जो ऐसे नॉर्मल इंसान को एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू get that logic. But what people do is they think that if they have started that question, they should spend time on that. So avoid those speed breakers. Okay, so that can be in all examinations. ठीक है, विजुअल रीजनिंग का एक आधा क्वेश्चन आ जाता है. सो that is the general structure that we have. Okay, then talking about the quant section, what was the structure of the quant section last year? Arithmetic 5 to 6 questions, ठीक है. मेंसुरेशन ज्योमेट्री 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इजी आता है, ठीक है. नंबर सिस्टम दैट मेनली इंक्लूड्स सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. सीरीज बेस्ड होंगे, बाकी 1-2 का ही
ऐसे कोई लास्ट डिजिट या ऐसे निकालो टाइप्स क्वेश्चंस आता है। ठीक है, मॉडर्न मैथ्स 1 और 2 क्वेश्चंस, एक डीआई आता है वेट इज इजी। ठीक है, एक टेबल से आया था, एक में बार ग्राफ आया था, और थर्ड स्लॉट में आई गेस उसमें भी टेबल थी शायद। ठीक है, सो टेबल और बार ग्राफ वेरी सिंपल colleges like questions on DI. Okay. Then algebra 3 to 5 questions. Now you can pick the questions, right? So it is not necessary to attempt all the questions, right? So you can pick कि ठीक है algebra नहीं आती, so skip those part. Okay. If you find like geometry difficult, you can skip that. So you can choose which questions to attempt, which questions to avoid, depending on your strength and weakness, right? So 20 questions, you have enough scope in this, right? Again, series based questions, can some of them can be done very fast, some of them might take time to uh, be done. Okay, so accordingly you can solve questions that कि कौन से इसमें से सही रहेंगे, कौन से डिफिकल्ट होंगे, so you can accordingly choose those. So this was the structure about the examination. ठीक है, so now let us talk about when should you start preparing for SNAP. ठीक है, सो लाइक कि अभी से प्रिपरेशन कर देनी चाहिए कि नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्नैप, इट इज नॉट द प्राइमरी टारगेट ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई स्टूडेंट होता होगा जो कहता होगा मुझे सिम्बायसिस ही जाना है और कहीं नहीं जाना है, राइट? सो इट इज वेरी रेयर चांस दैट इट इज अ primary target of like let us say if someone is from Pune, maybe might have a target that मुझे SIBM पुणे जाना है, राइट? बट नॉट द प्राइमरी गोल, राइट? इज देयर एनीवन हु हैज टारगेट कि मुझे स्नैप में ही क्रैक करना है और कोई एग्जाम नहीं देना है? ठीक है, नो सेक्शनल कट ऑफ, राइट? सो देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, देयर इज जस्ट ओवरऑल कट ऑफ, दैट इज आल्सो अ गुड एडवांटेज. ठीक है, अगर मान लो क्वांट और रीजनिंग ही सही है, फिर भी आप अच्छा कर सकते हो पेपर. सो द वन एडवांटेज इज नो सेक्शनल कट ऑफ. नाउ एज आई सेड दैट प्राइमरी गोल नहीं होता है. प्राइमरी गोल तो है नहीं किसी का ना. कोई ऐसा नहीं होगा कि मुझे स्नैप क्रैक करना है, राइट? सो yes, if your primary goal is this, good, right? So since you will be writing multiple examinations, right? So if you're targeting only this, then obviously you must have started your preparation by now. See, quant is like something that is similar. Quant is same as all exams. ठीक है, चाहे आप कैट की तैयारी करो, IIFT कर रहे हो, एनमैट की करो, सो क्वांट सेम है. ठीक है, उसमें ऐसा ज्यादा कुछ होता नहीं है. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि क्वांट में क्या करना है अलग से. ठीक है, क्या क्या नहीं करना है, राइट? Books, if we talk about the general books that you prepare for like other MBA examinations like Arun Sharma and all, that would suffice. ठीक है, DI, देर इज नो DI. ठीक है, DI से कुछ आता नहीं है, सो DI यू डू नॉट हैव टू प्रिपेयर. सो वन गुड थिंग. ठीक है, सो अगर आप कैट के लिए DI प्रिपेयर करो, स्नैप के लिए आपको DI कुछ प्रिपेयर नहीं करना है. तो अगर आपने कैट की प्रिपरेशन की है तो क्वांट की प्रिपरेशन तो अपने आप ही हो गई. ठीक है, DI आता नहीं है. ठीक है, दैट इज वन एडवांटेज. नाउ इफ यू टॉक अबाउट LR, व्हाट इज न्यू इन दिस थिंग, राइट? सो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स लाइक क्लॉक्स, कैलेंडर्स. ठीक है, विच आर नॉन कैट टॉपिक्स. आई एम राइटिंग दीज आर नॉन कैट टॉपिक्स. ठीक है, सपोजिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, clock calendar, then you have syllogisms. Okay, then you might have blood relations, then directions. ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं. ठीक है, ये आपको कवर करने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, राइट? इट्स नॉट लाइक लॉन्ग पजल्स. ठीक है, सो दैट यू नीड टू प्रिपेयर एडिशनल फ्रॉम कैट. मतलब जो कैट के लिए आप पजल्स वगैरह कर रहे हो, उसके अलावा ये चीजें कर रहे हो. ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द VA सेक्शन. ठीक है, अच्छा इसमें RC नहीं आता, पहली बात तो ये. तो अगर आपको RCs डिफिकल्ट लगते हैं, सो दैट इज एन एडवांटेज कि RCs आते ही नहीं.
कई लोगों को आरसीज पढ़ने में दिक्कत होती है, राइट? दे फाइंड दोस क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग and they think that it takes a lot of time. So good thing that RCs are not asked. Okay, so that should be your advantage. Now in VA, you have to work on your grammar and vocab. ग्रामर एंड vocab you have to prepare. ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको एडिशनल आपको प्रिपेयर करनी है. ठीक है, सो क्वांट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल एग्जाम्स, आप जेनरिक प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट देंगे, ये भी देंगे, वो देंगे, तो क्वांट ऑलरेडी प्रिपेयर हो जा रही है. ठीक है, आरसीज प्रिपेयर नहीं करने, मतलब ऑफ कोर्स यू विल बी राइटिंग अदर एग्जामिनेशंस, ऑल अदर एग्जामिनेशंस विल आस्क दोस. ठीक है, सो वो तो आपको करना ही है. ठीक है, एंड देन एलआर में ये कुछ एक टॉपिक्स हैं, मे बी दिस माइट रिक्वायर यू 10-15 दिन में आराम से आप इन्हें कवर कर सकते हो. ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर मच टाइम. बहुत आसान आसान से टॉपिक होते हैं. क्लॉक कैलेंडर एक दिन बैठोगे, मतलब 4-5 घंटे में अच्छे से समझ में आ जाएगा सारे सारे कॉन्सेप्ट, राइट? अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो. ठीक है, अगर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, मे बी 2 hours यू विल टेक टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. ठीक है, 4-5 घंटे प्रैक्टिस करोगे, क्लॉक्स कैलेंडर्स हो जाएगा. सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन. ठीक है, सो दैट यू कैन 10-15 days, मैक्सिमम 3 weeks लगेंगे आपको एलआर कवर करने का, नॉन कैट वाला. ओके, देन VA grammar and vocab, right? Grammar and vocab is something that you cannot build within 15 days. ठीक है, अगर आपको लगता है कि कैट के बाद हम तैयारी कर लेंगे स्नैप की, ठीक है, कैट नवंबर में खत्म होगा, फिर देखेंगे कैट बेकार हो गया तो प्रिपेयर कर लेते हैं, इट, बिलीव मी, इट कैन नॉट बी बिल्ट, राइट? सो ग्रामर एंड vocab टेक एटलीस्ट 2-3 months. ठीक है, vocab के लिए आपको पता है कि नॉर्मन लुइस इज अ गुड बुक. ठीक है, वर्ड पार मेड इजी, अगर उससे कवर कर लिया तो दैट विल कवर अ गुड पोर्शन ऑफ योर this vocab thing, right? And grammar you can refer to Ren and Martin, and there is another book called Raymond Murphy. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप बुक चूज कर सकते हो, विच एवर यू फाइंड, बोथ आर गुड. ठीक है, 2-3 महीने में ग्रामर और vocab पे फोकस करो. Now, why I am saying this focus on grammar and vocab? Because these are asked in all examinations. ठीक है, apart from CAT. CAT में नहीं आता, that does not mean that you should not prepare this. Now, if you talk about IIFT, if you talk about ZAT, if you talk about NMAT, ठीक है, if you talk about TISNET, जो भी एग्जाम्स होते हैं बाकी सब, उन सब में ग्रामर और vocab आती है. So, CAT की preparation is good, right? But CAT is not certain. Remember that. गारंटी नहीं है कि कैट प्रिपेयर कर रहे हो तो IIM में चले जाओगे. ठीक है, और हो भी सकता है कैट बेकार चला जाए. ठीक है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस फ्रंट ऑल्सो. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक MBA एग्जाम्स, जनरिक कैट तो ऑफकोर्स सभी देखते हैं, उसके अलावा देन यू विल रियलाइज. ठीक है, कई लोग अभी बोलते हैं नो आई विल नॉट राइट स्नैप, आई विल नॉट राइट एंड मैट. ठीक है, बस कैट की प्रिपेयर करना है. बट व्हेन कैट हैपेंस देन यू रियलाइज कि ओके देयर आर अदर एग्जाम्स आल्सो, let me try those, right? So that is the reality. So, right, not everyone will be able to do good in CAT, so let's face reality. So prepare for these things in from now itself. ठीक है, अभी से प्रिपेयर कर लोगे, लेट अस से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, right? By October you are good in these things also, your grammar is also good, vocab is also good, and these are, see, you should not take these as basically कि ये कोई learning, मतलब कोई पढ़ने के पर्पस से, right? These are life skills. Let us say your grammar is good, okay? So you can write impressively. Let us say आप कोई mail लिखते हो in professional way में, right? People appreciate that yes, this person has good. So everyone appreciates a person with good grammar, right? So if you make grammatical mistakes, people find अच्छा इसकी English अच्छी नहीं है, right? अगर ग्रामर अच्छी होती है, यू कैन राइट वेल. ठीक है, यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग ऑल्सो. ठीक है, इफ योर वोकेबलरी इज गुड यू कैन स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली. अगर वोकेबलरी कमजोर होती है, कई बार हम अटक जाते हैं कि कहाँ पे क्या बोलना है. ठीक है, क्या वर्ड होना चाहिए. बट इफ योर वोकेबलरी इज गुड यू कैन इम्प्रेस पीपल विद योर स्पीच, विद योर राइटिंग एंड ऑल. सो दीज आर, नहीं, मतलब कई बार हम सोचते हैं कि यार ये खाली एग्जाम देने के लिए पढ़ना है. नो, these are your actual your life skills also. That is why aptitude based examinations are a set of your skills.
ठीक है। अब क्वांट अच्छा होने का मतलब क्या होता है, ठीक है आपसे कोई पाइथागोरस थ्योरम वो सब नहीं पूछेगा, बट इन जनरल इफ योर कैलकुलेशन इज गुड, राइट, यू कैन मेक एस्टिमेशंस बेटर। ठीक है, आई बिलीव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ऑल दैट आर मोर नीडेड दैट रादर देन क्वांट। ठीक है, बिकॉज एलजेब्रा के इक्वेशन सॉल्व करना वो कहीं काम नहीं आएगा, बट डेफिनेटली योर लॉजिकल स्किल्स, your data interpretation, because kai bar like if you become managers, right, you have to analyze through a lot of data. Okay, so those will help. And verbal ability, these things actually help, right? RCs also help, right? At times you will have to read through a lot of pages, so how fast you can process information. Okay, so that is why these skills are needed. So if you are preparing for snap, and as I said कि अभी से अगर आप start preparation करते रहो, तो 2-3 महीने तो आपको verbal ability बनाने में लगेंगे, and like if you become good, right, so definitely like you can do good in verbal ability section. It's an advantage कि यहाँ पे RCs वगैरह नहीं आते, एंड इफ यू नो थिंग्स यू कैन डू देम वेरी फास्ट। ठीक है, अगर स्पीड स्लो भी है, पढ़ने में टाइम लगता है, सो दिस इज एन एग्जामिनेशन वेयर यू कैन डू गुड। देन एज आई सेड कि क्वांट एंड ऑल, like if it is good that will be to your advantage. Critical reasoning, right, we forgot about critical reasoning, that is again an important thing. With critical reasoning you will need again 3 months टाइम लेके चलोगे तब जाके अच्छे से कवर हो पाएगी। क्रिटिकल रीजनिंग में वही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, तो उसके थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, सो दैट यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन दिस एग्जामिनेशन। एंड बिलीव मी दैट some good students do not write this examination, right? So take this as an advantage, जिसका कैट अच्छा हो जाएगा वो स्नैप नहीं लिखता है। ठीक है, दैट हैपेंस। कैट अच्छा चला गया, ठीक है, पता है वहां अच्छा हो जाएगा, तो स्नैप लिखने वाले थोड़े कम हो जाते हैं। सो रिलेटिवली यू हैव एडवांटेज हियर, कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि बाद में होता है कैट के, ठीक है, किसी का अच्छा हो गया, किसी ने फॉर्म भरा, मन नहीं करता, वो कहता है चलो मेरा तो कैट में हो जाएगा। तो टेक दिस एज एडवांटेज, प्रिपेयर फॉर दिस फ्रंट। इफ यू बिलीव कि कैट में उतना अच्छा नहीं प्रिपरेशन हो पा रही है, ठीक है, इफ इट लुक्स बियॉन्ड योर कैलिबर, ये देखो हर किसी का कैलिबर अलग होता है, राइट, लेट्स एक्सेप्ट इट कि हर कोई उतना स्ट्रांग नहीं होता, एंड एवरीवन हैज डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज, राइट? सो कीप दिस एज अ प्लान, एंड देयर आर गुड कॉलेजेस आल्सो। ठीक है, सो instead of just focusing on one, keep this as a backup plan. And I have told you कब से start करना है preparation, and how much time does it take to for a normal person to prepare these things. ठीक है, अगर कोई fast होगा वो तो ठीक है, critical reasoning 1 महीने में भी cover कर लेगा। Okay, so quant if you are preparing for other examinations, you do not have to do any extra preparation. DI इसमें आता नहीं है, RCs आते नहीं है, so that is one big relief. ठीक है, how many times in single year? You can write 2 times. So it is once in December, ठीक है, 2 times in January. Last year I guess 23 December, मतलब मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, बट लाइक वंस इन डिसम्बर एंड लास्ट वीक में होता है, जनवरी में फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में। सो यू कैन राइट 2 out of 3 attempts max. You can write only once also, but you can take maximum 2 out of 3 attempts, and your better score is considered. Okay, whatever is your better score, that will be considered as a for the percentile. Okay, so this is about snap, and how to prepare, what all is asked, yeah, how it is different from others, so that's we discussed in this. So for Unacademy Plus subscription, if you want the subscription and are looking for a referral code, you can use my referral code PRPanth10, and you can get 10% discount on the Plus subscription. You can follow me on the Unacademy app for my special and Plus classes. Okay, I'll be starting course for CAT and other examinations, teaching quantitative aptitude and DILR here. And this mega compact is a scholarship test of 60 minutes, 30 questions on July 17, this Sunday at 12 p.m. So you can appear in this, and you need to unlock this code and you can use my referral code. MAT, okay, so and MAT we discussed on Monday, right? So Aditya, एक वीडियो है ऐसे ही टारगेटिंग अदर MBA टेस्ट एंड मैट। ठीक है, सो एंड मैट के वी डिस्कस लास्ट टाइम,
So if you I mean you can go to the channel and watch that video in which I discussed कि NMAT में क्या क्या होता है, ठीक है. Best college for MBA in operations. Okay, so best college for MBA in operations is NITI. ठीक है, NITI CAT के through लेता है. Uh, there are other good colleges also, right? All, I mean, of course, MBA, these IIMs and all are good for operations. Uh, but best is NITI, and it takes only engineers, by the way. Okay, and then there are like even NMMS is good. Okay, then those IITs and all these are decent ones. Because operations is like sort of you need like mathematics and all, right? मतलब वो technical knowledge is required, right? A sort of uh, uh, you could say that that blend of mind is required for operations. ठीक है, जिसमें mathematical calculations आप कर सकते हो, optimization and all. So NITI is best. Then you can say that even XLRI and like XLRI is very good. Then ABC, to no doubt, right? Without fail. Okay, ABCL you can consider. So these are some of the top colleges. NITI is specifically known for operations. ठीक है. और बाकी जो IITs वगैरह होते हैं, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, these are also IIT Mumbai, IIT Delhi, these are also good for operations. Okay, so this was about best college for marketing. So marketing, there are like lot of colleges. I am Ahmedabad. Then you have MICA, right? That is specifically for marketing. Then you have FMS, also is a very good college for marketing. Like all IIMs and all these are like marketing के लिए तो सभी कॉलेज अच्छे होते हैं, right? But for certain specifications, there are certain colleges like operations. NITI is operation specific, and then finance. If you talk about IIM Calcutta is the best. Then you have Jamnalal Bajaj is also very good for finance. Marketing, like all colleges, you get good companies. FMCG and all those sort of companies arrive in all the good colleges. Okay, so today we discussed about SNAP. We will discuss about other exams also like this, so that you understand कि कौन से possible exams हो सकते हैं. Plus class timing. So Faizan, I'll be starting a batch from 21st. Okay, you will get to know about it. Okay, so next week onward, my batch will start. You can follow me on Unacademy app. You can follow me on my Telegram channel also. Okay, so my Telegram channel is by the name MBA Karo. So in that, I keep posting that what are classes and all I have. Right, so you can ping me there. Okay, so whenever the classes are launched, okay, so that we will talk about it. MyCat, okay, so Sneh, surely we will discuss about MyCat also someday. Okay, so we are discussing one college at a time. Okay, so maybe in next 2 3 weeks you will be seeing a video on that as well. Okay, so we will discuss about all the colleges, like all these different examinations. Okay, so thank you for watching this video. Have a great night. Goodbye.